नमस्कार। नीरी स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी का सहर्ष स्वागत है। हमारे यहाँ एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नीरी के संदर्भ में यह कहावत 100% सच है। सन 1956 में दिल्ली में पहली पीलिया की जॉन्डिस की महामारी ने नीरी स्थापना की प्रक्रिया को जन्म दिया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संयुक्त बैठक में सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपेरी की स्थापना का निर्णय हुआ। 8 अप्रैल 1998 को सीपेरी की स्थापना हुई। इसीलिए आज का दिन नीरी परिवार के लिए विशेष हर्ष और उल्लास का दिन है। विज्ञान के साथ साथ मानव जाति का विकास होता गया, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। परिणामतः संस्थान की कार्य कक्षाओं का भी विस्तार हुआ। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री तथा CSIR की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी ने संस्थान का नामांतरण कर विस्तृत कक्षाओं के साथ संस्थान को जन कल्याण हेतु समर्पित किया। अब यह संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से कार्य करने लगा। हमारा सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम में नागपुर एम्स के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी तथा नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी जी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। CSIR-NEERI के निदेशक डॉक्टर अतुल वैद्य जी से अनुरोध है कि वे कृपया दीप प्रज्वलित करते हुए सम्माननीय अतिथियों को ससम्मान मंच पर ले आए। माचिस इधर ले आओ। सभी माचिस सामने ले आओ।
कोरोना के बाद आज ये पहला कार्यक्रम हो रहा है। लोगों का उत्साह बहुत ही सराहनीय है और हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। दीपो नाशयते ध्वान्तं, धनारोग्यं प्रयच्छति, कल्याणाय भवति एव दीपो ज्योति नमोस्तुते। कावड़े जी पंखा चलाइए। सभी मान्यवरों का धन्यवाद। निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे स्वागत पर 2 शब्द कहें। Very good morning to all. Today's chief guest, Dr. Chaudhary, Honorable Vice Chancellor, Nagpur University, students, Guest of Honor, Major General Dr. Viva Datta, Dr. Kumare, all the dignitaries of the dais, all our retired staff, all my fellow colleagues, scientists, students, all invited guests, media persons. On behalf of CSIR-NEERI, I welcome you all on this very foundation day of CSIR-NEERI that was established, as already told by Sabjwala Madam, that it was established on 8th April 1958. And the very reason for the establishment of this particular institute was the epidemic of jaundice in 1958. And the need was felt to establish an institute. And that time it was a matter, or it was a domain of public health, and therefore NEERI was established in 1958 as Central Public Health Research Institute. Of course, later on, as the spectrum of environment went on expanding in 1974, especially after 1972 conference, International Conference on Water, then Prime Minister Dr. Mrs. Indira Gandhi renamed this institute as National Environmental Engineering Research Institute in 1974. And since then, NEERI has been working in almost all domains of environmental research, all domains. And this spectrum is ever increasing. The work which we were carrying out in 1970, still we do that, but in addition to that, there are almost 10 to 15 more new areas where we have to work, and we are working. And the work of NEERI is ever expanding, especially in the era of sustainable development or sustainable environment. Role of CSIR-NEERI, that is, which NEERI will have to play in coming years, will be very significant, and this is a kind of responsibility on all of us. NEERI was established because of some epidemic that time, and incidentally, we faced a very critical pandemic, COVID-19, in last 2 years. And probably after 2 years of gap, this is the first NEERI Foundation Day, which is being celebrated in an open fashion, open manner, without any hesitation, without any restriction. Still, as a precautionary measure, I can see a lot of people put on mask. Of course, it is a good thing to have that. But most of the restrictions are bit taken off right now, and we are being free as such foundation. And why not to take a quick look at what NEERI has done in last 2 years.
So first, I will discuss upon few things quickly. Madam, to knowledge of all, that NEERI was first to establish a COVID diagnostic center in 2020 when the pandemic was just on. And there was no real facility available and a lot of patients were coming up. So with whatever facility we had with the support of our medical fraternity in Nagpur, NEERI established a COVID testing center and it was known as NEERI COVID Hub, which catered to the need of whole Vidarbha that time. And since then, last 2 years, this center has been working for the diagnostic as a diagnostic center for COVID. And there were times when we were under extraordinary pressure, especially in first wave, second wave was bad, and that time our people, Dr. Krishna Karna, who is heading this center, they worked day and night, literally day and night, to serve the call of the hour and really delivered its best. So that is a one creditable thing. Now we are into sequencing of sequencing of that thing also. And not only Dr. Krishna Karna, whole NEERI supported them with all scientists giving whatever equipment they have, sacrificing their own research work. So Dr. Krishna Karna is the all administration and finance facilitating the emergencies of that COVID center. And that way whole NEERI was actually, whole NEERI contributed to the success of that center. So I extend my special thanks to whole NEERI team. Then let's take a quick look at what we have done despite all these difficulties. Last year, NEERI has amassed 46 crores of external cash flow despite pandemic and despite I took over as director in practically month of December. But NEERI's work is going on with or without director. And we have generated 44 crores, 46 crores of external cash flow, which is a commendable job by all scientists. We have published more than 200 papers in SCI journals with a cumulative impact factor of 1593 and average impact factor of 6.42. And we have 3 SCI papers about 13 impact factor. Now this is again with or without director. This is the contribution. So NEERI keeps all our scientists and all our staff, they keep on moving with whether there is a director or not. Director is only for giving some directions. Otherwise, it is a facilitator. But otherwise, NEERI keeps on moving. So it's a very commendable thing. We filed 4 patents in this year. There are few things I would like to mention on this particular day is that we got CSIR Technology Award this year, Dr. Sadhana Raju and her team for developing green crackers on the directions of Apex Court Supreme Court. And we got CSIR Technology Award for that. One more thing I would like to mention because we were into a very bad pandemic situation last 2 years. All our doctors, medical doctors at NEERI, to name specifically Dr. Shilpa Panaspe, Dr. Prashanti Niwan, they managed because most of our staff was infected and these doctors, 2 doctors, day and night they managed our all staff and patients and excellent follow-up. Not only giving directions to the patients whether they should be admitted, what kind of medicine they should take, helping them, but answering all phone calls at all hours and taking follow-up, specific follow-up by both the doctors. And I request you give a big hand to Dr. for excellent management of pandemic situation in the institute. We are working for Swachh Bharat Mission, Skill India Mission, Smart Cities, National Green Highway Mission. All these things are there, they are continuing activities. And now coming to, because this is the time and we are into a typical domain, because in coming year, climate change, because Prime Minister has declared by 2070, nation has to be CO2 free nation, CO2 emission free nation.
And there are a lot of planning on the environmental front is also required. And therefore, all our orientation of the research, we cannot, because recently maybe has been through a performance assessment by the CSIR and you can say high class, top level committee of government. And at the same time, we cannot drop our existing areas of research. We have to get into more into new areas of research, especially with respect to climate change. And therefore, we are supposed to reorient our working without sacrificing the existing areas, and that is a critical job. So, fixedly, I would like to avoid all about that we have to put in our structure into four verticals. So whole Navy has to work in four verticals as per the suggestions of the peer. What can be those four verticals? To be very simple, environmental sustainability is all about managing environmental resource sustainably, managing your activities and environmental processes sustainably, managing your waste sustainably, and fourth vertical is environmental planning. So under these four verticals, NEERI organization would be realigned, and that is as per the performance assessment board suggestion. And we have given our vision, quickly what vision NEERI is looking for. In long term, NEERI Institute as an institute, it will be an institute with visibility and reliability in the society. It will be an institute with self-sustaining, reducing dependence on the government funding. We have to develop strong business development and commercialization of these technologies. And NEERI in coming future has to work with the other institutions of CSIR, other academic institutions, and other research institutes. So times are gone when a single institute can work alone with its own capability, because the environment domain has become so expanded so that we must collaborate with each other. And as a part of that, in the coming year, we are going to establish carbon capture and utilization center at NEERI by CSIR, funded by CSIR, and this is again a pan CSIR, or you can say inter-institutional center, where the research will be, all institutes will be contributing to the research on climate, on carbon capture and utilization. In addition to that, NEERI has given a lot of projects, submitted a lot of project proposals for establishing climate change research cells into NEERI, to Department of Science and Technology. One more thing which in coming year NEERI is planning to have is to have a demonstration plan for e-waste recycle in collaboration with National Metallurgical Laboratory, that is also CSIR laboratory, and that will be established in NEERI. And in addition to that, this is Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is 75th year of our independence. And then we are thinking of actually developing NEERI or landscaping in such a way that the contributions of NEERI throughout these years, throughout the 65 years, will be displayed and will be very conspicuous to society and all visitors. That is one thing. One more thing which we are planning this year is all the contributions by the various stalwarts of NEERI in these 65 years. There are many scientists who have done pioneering work in NEERI. Some of them are still there, some of them retired, some of them actually are no more with us. But their contributions are to be recognized, and then we are planning to have a compendium of scientists, NEERI scientists, significant NEERI scientists, not directors, all scientists who have contributed significantly to NEERI and environment. That is also being planned in the 75th year of this independence. So friends, with this, I again welcome you all for this Foundation Day celebration, and all the best, and I expect the cooperation and hard work from you as a director NEERI in coming years. Thank you very much. NEERI की भविष्यकालीन गतिविधियों से सभा को अवगत कराने के लिए धन्यवाद महोदय।
सतत विकास हेतु प्रयत्नशीलता। इस उद्देश्य के साथ संस्थान की कार्य पद्धति में कई विकास होते हैं। 63 वर्षों के अविरत प्रयास से संस्थान ने लगातार प्रगति का पथ भी अपनाया है। इसका सारा श्रेय इस संस्थान को समय समय पर मिले हुए सशक्त एवं सक्षम नेतृत्व तथा पूर्ण रूप से समर्पित कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का है। परिवर्तन ही जीवन का मूल मंत्र है। संस्थान में अनुसंधान की नई शाखाओं का समावेश होता गया। कार्यालय के रंग रूप में भी बदलाव आता गया। संस्थान जो देश की सीमाओं में कार्य करता था, इन सीमाओं को लांघकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने लगा। आज के इस आनंद उत्सव में विशेष अतिथि मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी, जो कि वर्तमान में नागपुर एम्स की डायरेक्टर हैं। आप एक सफल डॉक्टर होने के साथ साथ बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी भी है। आपका कार्य हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड रहा है। आपके संशोधन कार्य को नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में भी स्थान प्राप्त हुआ है। मेजर जनरल डॉक्टर दत्ता जी ने दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से बीडीएस, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे से पैथोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आपने ऑन्कोपैथोलॉजी में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से विशेष ट्रेनिंग प्राप्त की है। दिल्ली के एम्स से आपने ऑन्कोपैथोलॉजी में पीएचडी भी प्राप्त की है। आप एक्सेलेंट एकेडमिशियन होने के साथ साथ कुशल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। अपनी कार्यक्षमता तथा कार्य के प्रति समर्पण के चलते लखनऊ स्थित 800 बेड के सुपर स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल की कमांडेंट बनना आपने पसंद किया। इस अल्प परिचय के साथ मैं मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। Dr. Subhash Chaudhary, Vice Chancellor, RTM Nagpur University, Dr. Atul Vaidya, Director, CSIR-NEERI, Prakash Murray, CSIR-NEERI scientists and staff, students, teachers, and all the participants. A very good morning to you. At the outset, let me greet the entire community of CSIR National Environment Engineering Research Institute on the August occasion of its 64th Foundation Day. I would like to extend my thanks to Dr. Atul Vaidya, Director CSIR-NEERI, for this honor and giving an opportunity to become a part of this Foundation Day at CSIR-NEERI. Nearly 6 decades into its existence, CSIR-NEERI has undergone several phases of transformation, originating with the concept of human health. I cannot forget the beginning of CSIR-NEERI, as has just been told, as Central Public Health Engineering Research Institute, CSIR-NEERI, when there was no institute in India to deal with water problems. You know, water is responsible for many diseases, and foundation of this institute in 1958 was a step forward taken by the government to protect human health. No one can forget the news jaundice strikes New Delhi, published in the New York Times in 1955-56. This news brought into our notice that many people had been affected due to waterborne disease jaundice, and we needed an institute which could deal with the water problems, not just only deal with water problems, but could do research and development work related to water involving bacteriology, biology, and chemistry of water. The work done by the public health engineers and scientists in Delhi at that time had given life to thousands of people and also helped governments and municipal corporations. I still remember the first year MBBS course where there was mention of the Nalgona technique, which was used for deep fluoridation. I'm happy to state that this technique developed by NEERI not only is being used in India but in other countries like Tanzania, Kenya, and Senegal, which are still using this technique.
Such remarkable and landmark achievements of NEERI must be acknowledged. The past 60 years have been very influential as NEERI has dealt with a wide range of environmental problems. Starting with water, I think NEERI works on each and every aspect of environment, including climate change. I see the journey of NEERI started with water. It now encompasses air, waste management, ecology, biodiversity, eco-restoration, etc. NEERI is now working in almost all areas of environment. But consider all spheres of environment. Still, I feel the mandate given to NEERI in the beginning at the time of its foundation is more befitting. The target given to NEERI was human health, which was relevant at that time, and still it is relevant today. I understand that NEERI undertakes many R&D projects on different environmental aspects. I feel that all these R&D projects should be transformed into practical applications to protect human health. All R&D work must reach the society and benefit the nation. I would like to draw your kind attention towards India's ranking of Environmental Performance Index. India has ranked 168 out of 180 countries in the 2020 Environmental Performance Index, according to researchers at Yale and Columbia Universities, who say that India's decarbonization agenda needs to accelerate as the country faces a number of serious environmental health risks, including poor air quality. I think this is the area in which NEERI will have to take lead and carry forward its R&D activities in this direction to protect human health. I would like to specifically mention about the outreach programs of CSIR-NEERI, which have made difference. PG students from Department of Community Medicine, Armed Forces Medical College visit CSIR-NEERI every year, and every time they earn new knowledge on environmental and health. CSIR-NEERI has extremely done well in the past and currently has also doing good. I congratulate CSIR-NEERI on completing 63 years of its formation. On this occasion, I would also like to congratulate Dr. Atul Vedya, Director CSIR-NEERI, for its leadership, which encourages other employees to do well. I'm absolutely sure that with your commitment, support, and contribution, CSIR-NEERI will scale new heights in years to come. I wish to assure you that your positive and productive ideas will be nurtured and encouraged. I extend my warmest greetings on this occasion, and I would like to say that AIMS Nagpur is always there for any kind of support to carry out research activities on environment and health. With that, my best wishes to all of you. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज के कार्यक्रम में विद्यार्थियों का सहभाग सराहनीय है। कोई भी देश तभी स्वस्थ और शक्तिशाली बनता है जब उस देश के विद्यार्थियों को सही ज्ञान मिले, सही दिशा में ज्ञान मिले। विगत कुछ वर्षों से हमारा संस्थान भारत सरकार के जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत यह कार्य कर रहा है। आज NEERI जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वेबसाइट का उद्घाटन होने जा रहा है। इस वेबसाइट से ग्रामीण विद्यार्थी विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। यह वेबसाइट हमारे RDPD के स्टूडेंट्स ने अथक परिश्रम करके बहुत ही कम समय में सिद्ध की है। इस वेबसाइट के माध्यम से विज्ञान प्रयोगों को आभासी रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। जिन विद्यार्थियों को प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं है या प्रयोग के संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए यह वेबसाइट बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। इस वेबसाइट के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा करने का अनुरोध मैं निदेशक महोदय से करती हूँ। औपचारिक तौर पे मैं ये वेबसाइट का उद्घाटन हो गया था घोषित कर रहा हूँ। खास करके ग्रामीण स्टूडेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। सिमुलेशन की जानकारी संक्षिप्त में देने के लिए
मैं तुषार को आमंत्रित करती हूँ। Good afternoon, everyone. Firstly, what simulation actually means? It's nothing but performing physical activities virtually on your mobiles, computers, and laptops. As per the new national education policy, all the Indian institutes are going to get this mandate in the coming future. And as always, NEERI has pioneered, or it's a front runner in this field also, and we have already started working on it. What we are looking at on the screen is a simulated version of a laboratory. But a question must arise, why we require a laboratory on your computers? Looking at the poor lab infrastructure in many of the remote places in the country and pandemics like COVID-19, it was well required to create a facility which would be made available at ease to the students. Well-designed laboratories not only make science experiments fun, but also help students in achieving good academic results. And as it was once famously said by Louis Pasteur, without laboratories, the men of science are soldiers without arms. In this endeavor, NEERI is presenting to students a simulated version of laboratory which will be available on your mobiles, on your computers, on your laptops, on your tablets. So, in a way, NEERI is bringing laboratory to your pockets. We can perform experiments on various water analysis, air analysis, soil analysis, and others on this virtual lab. So let's now have a look at how this virtual lab actually works. In first few slides, you will get the information about this experiment, which in this case is about determination of dissolved oxygen using the modified Winkler's method. So once you click the next button, you will get the information of the objective of that particular experiment. Then you again click next, you will get further more information about the dissolved oxygen or the importance of the dissolved oxygen in our daily life. For conducting the dissolved oxygen test, we must first collect the sample, and for that we have collected a sample in this bottle. Not the least, this is a character which is our chatbot, which is acting as our chatbot. Her name is Jigyasa, which is given after CSIR-Jigyasa program. She is telling you about she has collected the sample in this bottle. When you click next, she will give you information about the BOD bottle because what she was holding in her hand was a BOD bottle, and students must not be aware of this. So she will give you the information about the BOD bottle, right? Then a student will also get information about the pipette because we are targeting this simulation over the classes 7 to 12. So they must not be aware of the pipette in this initial year. And so the simulation will give them information about the pipette and its use. So once we click Setup Lab, the lab automatically appears on your screen. This lab is a very realistic version of what we actually have in our school labs. So what you can see here, there are some chemicals or reagents, there are some apparatus and a table, a wash basin, a wash bottle, and everything that we require for this experiment. The names are displayed here, and this cursor, when once you take cursor on particular apparatus or reagent, it will show you the name. As you can see, the BOD bottle has started blinking. So what you have to do, as per her guidelines or her instructions, you just have to click on the BOD bottle and bring it to the table. So once you bring it to the table, she is asking you to remove its lid. Once you remove the lid, she will give you the additional procedure or whatever it takes, whatever instruction. She is asking you to add 2 ml of manganese sulfate or MnSO4 by means of a pipette. So once you take the pipette, for that you have to first take a beaker. Then you have to take this volumetric flask containing MnSO4 and you have to add this into the beaker. Then you have to click on pipette and collect all this solution or stuck all this solution into this pipette.
and then you have to insert it into a PVD bottle. Again, she's telling you the further procedure. She's asking you to add 2 ml of ethyl alkali potassium iodide with the help of pipette again. But what we actually do in lab, we will first wash the beaker and then we will collect. So she's asking you to wash the beaker. Once you wash the beaker, she will lead you further procedure. In a similar way, you have to add this alkali iodide, potassium iodide into this, and then you have to take the pipette. Again, the same procedure will follow. Now you can see the color has changed into this of the sample. So all these things actually happens in lab, but now it is happening on your screens. What we do actually, we will keep the lid onto the bottle and then you have to shake the bottle in the lab. So similarly, you have to keep the lid and shake the bottle. This mechanism actually automatically works. As you can see, the bottom portion has darkened a bit. So it shows the precipitate it has settled down at the bottom. You have to open the lid. Then she is asking you to add 2 ml of concentrated H2SO4. Now you have to again drag the beaker. Take H2SO4. And add it into the sample bottle. Now you can see the color has again changed. So she's asking you to allow the solution for at least 5 minutes. You can observe that the color of this solution is changing. Once this procedure is completed, you have to take this conical titration flask and take a 200 ml of sample into it. Now, most of you must be aware already. You will have to do the titration. For that, you have to open this knob. We have provided a button here. You just have to open the knob and you can see the color has changed. Now you have to add a starch indicator. So you will take this starch indicator and add it into this titration path. The color has again changed to blue. Again open the knob and what now you will get is a in titration written. And let's say if it comes out to be 5.2 ml. So she will show you the observation table and a formula which most of the students must not be aware of. So she is showing you the formula and then a final observation. The final value comes out to be 5.2 after the calculation. And then she will inform you that the experiment is completed. This experiment can be done for various other things like air analysis or water analysis, soil testing, and various other things. This simulation are specifically targeting, once again, to the class between 7 to 12, but it can also help common man to understand the various scientific processes in a very easier way because it's very user friendly and it will always be on your laptop or on your mobiles. Now some technical details. The simulation has been created using the HTML JavaScript and it can work with optimum internet availability. So it's a boon for remote area and for villages. We are working in collaboration with IIT Bombay, PNIT, CSIR, and also Government of Maharashtra in this project. NEERI is becoming a nodal institute in this area on environmental sciences and engineering. It is available on CSIR Jigyasa's national website and also on the website we launched today. Along with the theory behind the experiment, science involved, and procedure all have been given on the website. To check the knowledge gained while performing the simulation, student can attend a particular quiz and they can test their knowledge. We do have provided options for data analysis and data interpretations, which not just the observation table, students can also add some values and perform this in other simulations.
In order to enable students to conduct more and more hands-on science activities, NEERI is not going to stop with few simulations. We do already have provided, in coming days, NEERI will bring the other activities, interactive activities for students in the form of games, comics, infographics, and videos on this website and also on the Jigyasa platform. And धन्यवाद तुषार। आई एम श्योर इतने अच्छे ढंग से अगर विज्ञान पढ़ाया जाए तो हर बच्चा विज्ञान पढ़ना चाहेगा। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर सुभाष चौधरी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के माननीय वाइस चांसलर, जिनसे हम सभी परिचित हैं। मूलतः सिविल इंजीनियर हैं। आपने बीए नागपुर से किया तथा एमए अमरावती से किया। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की। डॉक्टर चौधरी नागपुर के दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के प्राचार्य रह चुके हैं। आपने अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स का सफलतापूर्वक संपादन किया है। डॉक्टर चौधरी ने लघु उद्योग इकाइयों के तकनीकी मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य किया है। ग्रामीण रोजगार निर्मिति में आपका बहुमूल्य योगदान है। मैं डॉक्टर चौधरी से इस सभा को संबोधित करने का अनुरोध करती हूँ। Good afternoon to everyone. The distinguished guest, Major Dr. Viman Karta, Director of NEERI, Dr. Atul Baiju, many learned and experienced people in front of me, researchers, students, and the audience. Being the head of the university, I am here. NEERI is also the recognized institution of Nagpur University for research movement. And there is no need to explain about the NEERI and its most famous in India and internationally known. As already told by Betty, that the NEERI had been involved in many researches whenever the nation came across any pandemic or any problems. And not to that, in pandemic also, I think, as per my knowledge, is concerned, the genome sequencing has been done by NEERI, and that's why NEERI again came into picture in action during pandemic. NEERI has worked much more on COVID-19 also. Fortunately, Nagpur University has also contributed more for COVID-19 situation. Nagpur University also has established COVID-19 testing lab. Nagpur University has given the the hostel for the patients. We have also given the testing for that sample collection centers, vaccination centers. Not only that, even for that main new administrative building, that is G+E, all upper three floors have been given for the hospital, COVID-19 hospital for pediatric, and which has been completely developed and ready, made ready by Nagpur Municipal Corporation for pediatric patient was third wave, and fortunately that third wave was not there. So it was there, but no one was hospitalized. But the Nagpur University is also working for the nation or for the area, and the district is working, university is working. And just good by Dr. Atul Baiju, director of this NEERI,
that this is the time to realign all those verticals, and that too he has touched the concept of sustainability. And here the sustainability concept is more important. United Nations has defined 17 goals, sustainable goals. And now this is the time that everyone should think about the sustainability. And these 17 goals, it is the blueprint to achieve a better and more sustainable future of all. That is more important. No doubt, every research institution, in the academic institutions, the individuals are working and finding are doing research. We come out with the results and we suddenly try to apply for the day-to-day life. But we never think about its end result, its sustainability. And one find there again then it comes that these are the negative effects of these purchase of these applications. And that's why whenever we undertake any research, no doubt, every research has some aim. But when one must think about the sustainability of that, अगर वो sustainable नहीं है for human being, for nature, for environment, for the society, then one must think about the outcome of the research. And that's why UN in 2015 has very clearly projected that these 17 goals should be considered for each and every activity, even in academics also. Recently, at Bangalore, All India Conference, All India Meet of Vice Chancellors, there also, it has been discussed more that how these 17 goals should be included in the curriculum. Every student must understand these 17 goals. And in that 17 goals, at least 6 goals are also are included. 6 goals are such which are related with the NEERI or especially NEERI. Neither certificate NEERI and NEERI. That is the those 6 are out of 17 is good health and well-being, clean water and sanitation, affordable and clean energy, climate action, life below water, and life on land. One must think about each and every species on the earth. And unless and until this complete system is live, we cannot survive for comfortably. COVID has already given a better experience. हम सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं एंड नेचर की हर चीज हमारे काम की है हमारे लिए और वो सब पूरा साइकिल मेंटेन कर रही है, एक मेंटेन साइकिल एक दूसरे को के ऊपर डिपेंडेंट होकर पूरी साइकिल मेंटेन एंड दैट टू वी हैव टू मेंटेन दैट दैट्स व्हाई दिस सस्टेनेबिलिटी कांसेप्ट हैज बीन अराइव्ड। जब भी कोई रिसर्च होता है तो उस रिसर्च के कुछ परिणाम भी हमको सोचने पड़ेंगे, सिर्फ फायदे नहीं। अभी टेक्नोलॉजी तो बहुत डेवलप हो रही है, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। When we introduce any technology, no doubt negative impacts हो गई। And as we are human being, हम change चाहते हैं हर वक्त, और आजकल change तो बहुत rapid होने लगा है। We always like the changes very rapidly, पहले इतना fast नहीं था। But we now prefer to have the change, नहीं अभी नहीं आना चाहिए, अभी वो आना चाहिए। And that accelerated changes may harm sometimes. No doubt, अभी इंसान है, हमारे पास cognitive skill दिया है, that's why we can do this all researches, development, everything. Otherwise, animal की तरह हम भी वैसे ही होते थे, वो भी रिसर्च नहीं कर पाते, लेकिन वो जी रहे हैं, ठीक है। जितने भी problems create हो रहे हैं, all these are man-made. नेचर नहीं क्रिएट करता, नेचर को बैलेंस करने की कोशिश करता। चाहे बिल्डिंग हो, अर्थक्वेक आना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, वो तो नेचुरल है। पर अर्थक्वेक से जो कोलैप्सेस हो रहे हैं या हानि होती है प्राण, वो हमारे वजह से, लेकिन हमारी डिजाइन ही ऐसी। दैट इज द मैन-मेड। चाहे वो फिर पैंडेमिक सिचुएशन हो, एनी डिसीज हो, कुछ भी हो, आई थिंक वो हमारे लाइफस्टाइल के कारण भी हो रही है। हमारे कुछ ऐसी
रिसर्चेस है या हमारे कुछ ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं चीजें या हम कुछ ऐसी चीजें यूटिलाइज कर रहे हैं because of which we are facing such type of problem. Otherwise, nature is trying to compensate and try to make everything balanced. But if we go against the nature, definitely we will have to fail there. जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली देयर विल बी एडवर्सिटी. डेवलपमेंट चाहते हैं तो गिव एंड टेक पॉलिसी नेचर कभी एंड द साइंस is nothing can be destroyed and nothing can be produced suddenly. One form to other को change हो. And that's why कुछ अगर पाना है तो दूसरा खोना है. So that concept is there. That's why while using natural resources, while using it, one must think about the natural sustainability. Very rightly said by Dr. Right? Now everyone has to align with the sustainable goals. And that too, it is very important for the students. So यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, इसलिए that's why I'm using this their language. कि हम सब हम तो पुराने हो गए, हमको आदत पड़ गई थी सब ये मिक्स खाने की integrated food and all this. We have habituated. Madam has very rightly said that water is also the media through which diseases can be spread. Not only water, air, soil, even light also. इन सबको बचाना है, इन सबको क्लीन रखना है, ऐसा सस्टेनेबिलिटी सेंस. But day by day we are using the technology, we are using for our comfort so many things because of the nature they disturb. For example, I will take one example of energy. Well, our nature का ये rule है, मैं energy को इसी example कोट कर रहा हूँ कि we can understand very easily. Nature का एक rule है कि everything it keeps in lowest energy form, data line. जब भी कुछ भी high energy stage पे आता है तो nature will bring it everything in the lower energy stage. For example, आप लोहा लीजिए और कास्ट आयरन लीजिए, स्टील एंड कास्ट आयरन, स्टील नॉट स्टेनलेस स्टील जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या हमारे फैब्रिकेशन में यूज करते हैं, एंड फिल्टर की कास्ट आयरन, दोनों को नेचर में रख दीजिए, कौन सा पहले डिटोरिएट होगा? डेफिनेटली स्टील विल गेट डिटोरिएट, जिसको माइल्ड स्टील कहते हैं या हाई एयर स्टील कहते हैं. व्हाई? क्योंकि कास्ट आयरन प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट एट लो एनर्जी स्टेज. At the mild steel or a high yield steel is at the high energy stage. और जब वो नेचर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो it will get converted into ferric oxide और ferric oxide is again the natural form of mineral. मिनरल है, फिर से जमीन पे वापस अपने स्टेज पे चलेगा. ये कहाँ होता है कि जमीन का बना हुआ है तो जमीन पे वापस आएगा. ये नेचर साइकिल है. आपने देखा होगा कि लाइम, हम पुराने जब हमारे जमाने में लाइन जो आता था वो एक ड्रम में आता था, स्टील के ड्रम में, और आज जो लाइन देखते हैं वो ओपन स्पेस में है. तो आज हम मार्केट में लाइन देखते हैं वो कोई लाइन नहीं है, इट इज लाइन एंड लाइमस्टोन काला होता है और लाइम सफेद होता है. लाइमस्टोन इज द कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन उसको भट्टी में या किल में जब हम बहुत एनर्जी देते हैं, पकाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होके कैल्शियम ऑक्साइड करके लाइम बनता है. आप वो लाइम दिन में रख दीजिए, सवेरे शाम को पाउडर हो जाएगा. अगेन इट विल गेट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, लोअर एनर्जी स्टेट. इट विल रिलीज द हीट एंड इट विल अगेन कम बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट. तो ये एनर्जी का बैलेंसिंग ये नेचर करता ही है, और हम डे बाय डे एनर्जी का कंजम्पशन बहुत बढ़ा रहे हैं. ऐसी कौन सी हमारी लाइफस्टाइल है जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फ्यूल एनर्जी या पेट्रोल डीजल जो भी है पेट्रोलियम नहीं यूज कर रहे हैं? पहले बहुत सारे काम हम मैन्युअली करते थे. इवन घर के काम है, अपने डे टू डे लाइफ में चलने वाली जितनी भी चीजें हैं, इवन व्हीकल्स है, मैन्युअली चलाते थे. घर के काम भी जो है वॉशिंग वगैरह सब मैन्युअली होते हैं. डे बाय डे एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड और धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ रहा है. और हमारा जो फिजिकल एनर्जी है, मैन मेड एनर्जी,
जो हम बन रहे हैं वो हम जिम में एक्सपेंड कर रहे हैं, वो जिम में खर्चा कर रहे हैं। इट इज वेस्टेज ऑफ द एनर्जी। जो हमारी एनर्जी जब हम जाते हैं जिम में तो हम पूरी एक्सरसाइज करके अपनी एनर्जी वहां वेस्ट करते हैं और इधर एनर्जी बचा रहे हैं, उधर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। नो डाउट नाउ द कंसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड कि जिम वाली एनर्जी कंजर्व किया जाए और वो कहीं यूज किया जाए, क्योंकि समवेयर बॉडी एनर्जी शुड बी कंजर्व। एनर्जी बचाना, सेव एनर्जी, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अभी नया डिवाइस आ गया है हमारा मोबाइल, एक नहीं दो रखते हैं, ऐसे चलता है इलेक्ट्रिकल चार्जिंग और करोड़ों लोग इलेक्ट्रिकल का कंजम्पशन बहुत बढ़ा है। नाउ कैन वी थिंक दैट डे बाय डे इंक्रीज ऑफ एनर्जी ये आती कहां से है? ये आती है कोल बर्निंग से। आइदर न्यूक्लियर एनर्जी से होती है, उसको कम है, हाइडल एनर्जी होगी या तो फिर थर्मल एनर्जी होगी। हाउ दिस एनर्जी इज क्रिएटेड बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड हाउ ये बाय बर्निंग ऑफ कोल इवन अपन इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बोल रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं है, क्योंकि आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी कहां से? इट विल आल्सो कम थ्रू द बर्निंग ऑफ कोल एंड बर्निंग ऑफ कोल के हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बढ़ना है, एश कंटेंट जो है तो हमारे लैंड पे बढ़ रहा है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द अगेन नॉन सस्टेनेबल साइड कि जिसमें हम एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, साथ में साथ हम पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। हम रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हमारे कुछ लाइफस्टाइल को भी हमको चले सोचना पड़ेगा। हाउ कैन वी मिनिमाइज ऑल दिस? नो डाउट एट द सेम टाइम we are introducing some such product which needs lesser energy, कम से कम एनर्जी लगना है। जैसे अभी पहले बल्ब आते थे फिलामेंट पर, ज्यादा पावरफुल थे, धीरे धीरे फिर ट्यूबलाइट्स आया, फिर उसके बाद जो स्केपल आया, अभी एलईडी आ गई। अभी कंजम्पशन के लिए हमने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाले कि हाउ कैन वी यूज हाउ कैन वी रिड्यूस द एनर्जी। तो वी आर डूइंग इट, स्टिल वी कंजम्पशन कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट में हम तो रोक नहीं सकते use of energy, but at the same time the research should be there how can we use the conventional energy, conventional energy का use कैसे बढ़ाएं और वो हमारा consumption of energy या how to introduce such devices जिसमें कम से कम energy लगती है। This example I have taken only to understand कि हम जो भी नया कुछ सोचते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी नेचर पे आता है। अब नेचर ठीक है तो हम ठीक है, हम जितना भी रिसर्च कर रहे हैं हमारी बॉडी कई सभी उसके एक बहुत बड़ी लैब है। अगर बॉडी रिसर्च तो बिग लैब जिसके अभी तक हमने रिसर्च करने के अभी स्टिल इट इज इनकम्प्लीट, उसके हर चीज का पूरी बॉडी इज वर्किंग विद मेनी एल्गोरिथम, कितने सेंसर्स लगे हुए, कितनी सारी मैकेनिज्म, कितनी टेक्नोलॉजी है, उसी को स्टडी करके हम आगे उसके डीप में जा रहे हैं। So science is leading us to get deeply into the basic of all those mechanisms. Follow? But our body itself is a bigger lab जिससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। उस बॉडी को भी मेंटेन करना नेचर कर रहा है। कोविड ने तो ये बता दिया कि नहीं आपकी मेडिसिन और वैक्सीन कोई काम नहीं करेगी, आपकी बॉडी ही आपको बचाएगी। नेचर ने बनाया है। Nature has created everything to balance, to react, to fight with the enemies or to fight with the viruses and bacteria. ये सारा चीजें लेकिन हम नहीं कर पा रहे। We are not in position to resist that. Why? Because something, some disturbances have been created either through consuming some item, either through air, either through water. All these are the factors which are disturbing our lifestyle or human being, and that is which we have to think about in detail. Very rightly said that in the there should be a multidisciplinary approach in every research. Now, Government of India has introduced NEP 2020, a very nice policy for education, because unless we start with that type of education, the development in positive direction and growth of the nation is not possible. And that's why there the compartment system has been, that is, receipt compartment system has been dissolved, and it has been suggested that there should be multidisciplinary studies, and that such type of studies can only lead us for the greater height. अभी
जो जितने रिसर्च होना है वो हो गए हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र में जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक कुछ होगा। नाउ आपने कभी सुना है कि इंजीनियरिंग के प्रोफेसर्स आर प्रिपेयरिंग द बॉडी बोथ पार्ट्स थ्रू 3D प्रिंटर्स। अभी वीएनआईटी जो है एक बहुत अच्छा इनोवेशन है, डॉक्टर आई थिंक उठे इज हैंडलिंग दैट and he is now providing many parts of the body, both parts, by 3D printing. क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया किसी का, एक जॉ का फ्रैक्चर हो गया तो उसका एग्जैक्टली मिरर इमेज वाला पार्ट नहीं मिलेगा, किसी दूसरे बॉडी का निकाल के लगाते थे। अभी बराबर उसका स्कैन लिया जाता है, उसका कंप्लीट परफेक्ट मेजरमेंट होता है, उस स्कैनिंग से फिर एक इमेज 3D इमेज बनती है दूसरी साइड की मिरर इमेज, और वैसे ही पूरा पार्ट बनके तैयार होता है, वो इम्प्लांट होता है। ये तब पॉसिबल हुआ जब मेडिकल इंजीनियरिंग मेरे पास में। Most of the medical institutions or medical colleges or medical sciences are based on the instrumental result. ये इंस्ट्रूमेंट आते कहाँ से, टेक्निकल या साइंटिफिक नहीं लगता। बट इफ दे कम अगेन मोर क्लोजर, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें बहुत स्पीडी डेवलप होगी। और अभी नया जो आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो हमारा काम और आसान कर देता है। अभी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सोचते बैठेगा, खाली बोल देते हैं। So this is the way we are developing ahead, no doubt. Artificial intelligence can give the result. Yes, यहाँ प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करो, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत। So there are so many researches going on. In my college, I found there was one project which we were trying to develop. That person from he was working there at America and he shifted to India for some equipment development. And our college was working with him. उसके लिए बहुत बड़ा data चाहिए. What he wanted to do, he wanted to have two rings. One is in left hand and second is on the right leg, or either on left leg and right hand. There would be two bands, and that two bands will automatically scan the activity of every body, and in your mobile everything you will get reason कि आपका बीपी कितना चल रहा है, आपका प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हो गया। अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो सिग्नल चले जाएंगे रिलेट इसको कि आपके इनका प्रॉब्लम क्लियर हो गया। So this type of technology they are developing. Mr. Surya was there. So artificial intelligence, big data analysis, all these are making all this concept very easy. And that's why here, I think the new one concept or one terminology has been introduced or e-based. Day by day we are using the e-devices or gadgets. But it is also, once it is useless, then that e-waste is most harmful for the environment. And the circuits or the chemicals which are used there harm this environment very badly. And that's why e-waste disposal should always be properly disposed of to duplicate the I think in the Nagpur in MIDC there is also the e-waste we say recycling unit. And that's why whenever you use this project, you should not throw it anywhere. उसको एक जगह collect करो, proper person को handle करो, that will be destroyed or recycled. So these are the things that sustainability concept in our curriculum also. We are trying to improve the sustainability concept, and from the childhood only, this should be imbibed in their mind. कि नहीं आपको ये नेचर के लिए, ह्यूमन के लिए और सबके लिए करना पड़ेगा। And then only we can be happily living in nature. And I think being human being, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम ग्रुप में रहते हैं, इंडिविजुअल नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए अब ये ग्रुप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड या कंपार्टमेंट या डोमेन वाइज नहीं होना चाहिए कि ये मेडिकल वाले, ये इंजीनियर है, ये ह्यूमैनिटी वाले। The group should be now मल्टी डोमेन ग्रुप। सब मिलके अगर हम एक जगह आते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्रगति होगी। And nature will come out with very good result, and we human being can very safely and healthily we can lead the nation. And I'm thankful that Director NEERI
as already got as a base. But I am really apart from this, your domain. But as I say, every domain should come closer for the nation development. Thank you. Thank you very much. आपके विचार प्रवर्तक मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद महोदय। जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारा आनंद उत्सव है और कोई भी उत्सव पुरस्कारों के बिना पूर्ण नहीं होता। नीरी स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान में सर्वोत्तम कार्य करने वाले सदस्यों को पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार प्रमाण पत्र स्वरूप होता है और कुछ पुरस्कार नगद राशि भी समाविष्ट करते हैं। ये पुरस्कार दो विभागों में दिए जाते हैं, पहला व्यक्तिगत पुरस्कार और दूसरा है विभागीय पुरस्कार। पहले हम लोग व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान करेंगे। मैं सभी मान्यवरों से अनुरोध करूंगी कि ये पुरस्कार प्रदान करें। पहला पुरस्कार है बेस्ट जूनियर साइंटिस्ट। ये दो लोगों को मिला है, डॉक्टर शारदा कोलकनकर। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ सराहें। दूसरा पुरस्कार है डॉक्टर पी नागाबाबू। डॉक्टर पी नागाबाबू बहुत काम किया है। बेस्ट टेक्निकल ऑफिसर अवार्ड है श्री सतीश लोखंडे। Appreciation certificate for all common cadre श्री दुर्योधन सेठी, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। Blank वाला देना सर्टिफिकेट। CSIR-NEERI Foundation Day Award 2022 presented to Shri Duryodhan Sethi. This is award or certificate for commitment, dedication, and belongingness. Okay. Common character officers cannot perform unless they think they belong to Navy, because they keep on transferring after 2 years. Thank you, Sethi. Shri Shailesh Kumar, Administrative Officer. Shri Harish Kumar, Administrative Officer in ADB. Shri R.D. Chinchulkar, Sales and Customer Officer. बेस्ट ऑफिस पर्सनल के लिए मिला है मिसेस अंजू बाला। ये दिल्ली जोनल सेंटर से हैं, शायद वो यहाँ उपस्थित नहीं होंगी, फिर भी हम उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। संस्थान के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक स्वर्गीय श्री पी.एस. दत्त स्मृति अवार्ड फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। यह पुरस्कार प्रमाण पत्र तथा 15,000 रुपए की नगद राशि के रूप में दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार 2 छात्रों में बटा हुआ है। पहला है विजया लक्ष्मी। मिसेस दत्त शायद हम लोग से ऑनलाइन जुड़ने वाली थी,
लेकिन वो नहीं जुड़ पाई। She is in USA. हाँ, she was good. Okay. I think that will be transferred to their account. Cash will be transferred to their accounts directly. That is the assurance given by Dr. Mrs. She is in USA right now. दूसरा है दिलीप पांचाल। दिलीप पांचाल, फ्रंट रो। आखिरी का और सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड, बेस्ट डिवीजन अवार्ड, environmental impact and sustainability. Sustainability division. 6 तारीख को, एक मिनट, 6 तारीख को CSIR फाउंडेशन डे, नीरी फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। उस रक्तदान शिविर में डॉक्टर सुरेश कुमार ने अपने परिवार के साथ रक्तदान किया है। सभी का धन्यवाद। निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वो अतिथियों को सम्मान चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर सुभाष चौधरी, मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी, श्री प्रकाश कुंभारे जी से अनुरोध करूंगी धन्यवाद ज्ञापन करने का। परिचय महानुभाव और सभी साथी विद्यार्थी, एक्चुअली जो सबसे पहला मैसेज था मैं उसको फिर से दोहराना चाहूंगा कि रिसर्च जो है वो हमें सस्टेनेबिलिटी के मद्देनजर आउटकम को सुनिश्चित करना चाहिए। जो संदेश दिया है, जो मैसेज दिया है इस आज के दिन, तो मैं हमारे जो माननीय उपकुलपति राष्ट्रपति सुब्रजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, उनका बहुत सर्वोदय आभारी हूँ। उन्होंने आज के दिन हमें जो एक राह दिखाई। सस्टेनेबिलिटी शुरू से ही एक विषय रहा है, लेकिन अभी जो उन्होंने जैसे जिक्र किया कि सस्टेनेबिलिटी गोल्स है, उसके मद्देनजर हमें कार्य करना चाहिए, तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपने समय से समय निकाल कर यहाँ पर आए और जो समय दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत थैंक्स। माननीय निदेशक है हमारी एक, उन्होंने जो एक मैसेज दिया है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन स्थापना जब हुई थी नेरी की सिपेरी के रूप में, तब ये विषय था और आज भी प्रासंगिक है, रिलेवेंट है और उस दिशा में हम करते ही है और करते रहेंगे। और मैडम ने बहुत सारी चीजें कही कि कोलैबोरेशन एक कहा है इसके साथ और बाकी और अन्य संस्थानों के साथ वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम अकेले दम पे नहीं कर सकते और हमें आगे बढ़ना है। पर्टिकुलरली आज के दिन जो हमारे प्रधानमंत्री है, भारत सरकार है, उनके लक्ष्यों का जो अगर उनके उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तो हमें कोलैबोरेशन, सहयोग के मार्फत या सहयोग का जो है जरिया है, मीन्स है, टूल है, उसको अपनाना होगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपने भी हमें समय दिया आज के दिन, आपको बहुत बहुत थैंक्स। और आपने मेरे ख्याल से जो हमारा इन्विटेशन है बहुत शॉर्टली बहुत एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए हम बहुत आपके हृदय से आभारी हैं। और निदेशक महोदय है, उन्होंने भी जो कहा है बात कि जो चीज है उसको सस्टेनेबिलिटी, और आज के समय उन्होंने रिओरिएंटेशन की, रिअलाइनमेंट की बात कही और कुछ वर्टिकल्स की बात कही, और वो होना भी चाहिए। हमें ट्रांसफॉर्म होना होगा, अगर हमें चीजों को बदलना है, अपने आप को बदलना पड़ेगा और तभी हम देश के बेहतरी के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स सर आपका जो आज आप देख रहे हैं। और जो मेरे जो साथी है जिन्होंने जिनको अवार्ड मिले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आमंत्रण स्वीकार करके आने के लिए और अवार्ड को स्वीकार करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको पुनः अभिनंदन। और संस्थान के हित में और संस्थान को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए सबका योगदान मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको अवार्ड मिले वही, जिनको अवार्ड नहीं मिले हैं उनको भी, उनका भी बराबर योगदान रहा है और उनको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संस्थान
क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी इंजन में इग्निशन की जरूरत होती है तब इंजन चलता है। इंजन के पुर्जे बराबर होते हैं लेकिन इग्निशन तो हम कहेंगे कि ये एक पुरस्कार इग्निशन के रूप में है क्योंकि इन्होंने इंजन को इग्नाइट किया है, लेकिन इंजन बिल्कुल इंटैक्ट है और इग्निशन को हमने उसको सम्मान दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आज इग्निशन इन्होंने किया है, अगले इसमें जो और लोग हैं हमारे नेवी के वो इग्निशन करें, इंजन को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से चलाए तो सम्मान के पात्र बने। थैंक यू वेरी मच। और बाकी जो मेरे विद्यार्थी हैं आज 1200 के लगभग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, उसके बाद प्राइमरी हर एजुकेशन का लेवल से है, 7वीं से लेकर तो 12वीं तक, 5वीं से लेकर तो 12वीं तक। उनका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ क्योंकि हम उनको जैसे एक फोन करते हैं कि ये जो हमारा इस आज के दिन जो वनडे होता है हमारा उसका फायदा उठाइए क्योंकि आज हमारी सारी लैब्स ओपन है और सारे साइंटिस्ट, सारे प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। जो यहाँ है हमने तो प्रोग्राम सुना लेकिन बहुत से ऐसे अभी जो हमारी जो विजिट चल रही है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारा ये जो वर्क कर रहे हैं उनको जो स्टूडेंट्स को सारा मीटिंग करना, उनको डेमोन्स्ट्रेशन करना, ये सारा काम चल रहा है। और मैं उनको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सोसाइटी समाज के हित में, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी में जाना और उनको एंटरटेन करना, उनको ब्रीफिंग करना, ये भी सारी और हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है, हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है जो आज लगे हुए इस पूरे कार्य में, उनका भी मैं सहृदय आभारी हूँ क्योंकि वो गेट से लेकर तो यहाँ तक और मेरे साथी जो है पूरे प्रोजेक्ट असिस्टेंट वो भी निरंतर मैं देख रहा हूँ 8:30 बजे से अभी तक पूरा कार्य कर रहे हैं मेरे साथी भी। और जो ऑडिटोरियम के अरेंजमेंट्स वगैरह तो आपको तो पता है कि कोई भी कार्यक्रम हो बहुत लेबर लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। और मैं ऑडियंस में नाम तो नहीं लेना चाहूंगा लेकिन विज्ञान भारती और जन आक्रोश में देख पा रहा हूँ, मीडिया के कुछ साथी देख पा रहा हूँ, उसके बाद बहुत से है तो मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे आज के दिन जो हमारे पूर्व साथी है, पूर्व वैज्ञानिक है, सीनियर साइंटिस्ट है, फॉर्मर साइंटिस्ट है, फॉर्मर स्टाफ है, इस बार सर हमसे गलती हुई है क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम लेट होने के कारण हम आपको प्रिंट मीडिया जो है प्रिंट का कार्ड नहीं भेज पाए, लेकिन अगले बार से ऐसे नहीं होगा। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है फोन करके ये करके वो करके कि आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन जाए, लेकिन अगली बार से हम वो भी जो हमारा ये बोर्ड का प्रिंट वो भी शुरू करेंगे। और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गलती से किसी का नाम छूट रहा छोड़ रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपके सबके प्रयासों से, सबके एफर्ट से ये प्रोग्राम सफल होता है। और मैं यहाँ पे कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। और जया सब्जी वाले मैडम ने जो कंपेयरिंग की या फिर मेरे साथी जितने हैं वो सारे मेरे साथ है। तो और जो जिज्ञासा का एक जो प्रोजेक्ट बताया गया था आपको तो सही में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो हेल्प करेगा। और एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में पर्टिकुलरली वाटर और एयर और सॉइल के बीच में जैसे काफी उसमें हम एक लीडर बनने की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूरा कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हम कोशिश में है, मेरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, आईटी बॉम्बे से तो हम करेंगे, समय लगेगा लेकिन एफर्ट्स हमारे हाथ वर्क चलता रहेगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और पुनः आपको आज की इस फाउंडेशन डे की शुभकामनाएं देता हूँ सभी स्टाफ को। और अंत में मैडम मैं जलपान के आमंत्रित करूँ आपका आप कोई भी करो करो लेकिन जलपान का आमंत्रण आवश्यक है। तो मैं इसी के साथ आपको जलपान के लिए मैं कैंटीन में आमंत्रित करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने पिछले दिनों देखा है कि बहुत जगह कम होने से थोड़ा सा एक मिसमैनेजमेंट सा हो जाता है, तो आप कैंटीन में सभी आमंत्रित हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई और सभी को फिर से सभी का धन्यवाद करते हुए मैं यहाँ पे अपने कार्यक्रम की घोषणा समाप्ति की घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।